Good morning, dear students. As you know, our chapter Income and Employment is in progress, and few topics we have already explained. Today, I'm going to do another topic, how to get equilibrium level in the economy. So my question here is explain the theory of determination of equilibrium level of income and employment with the help of AD and AS approach or consumption plus investment approach, कि किसी इकोनॉमी में किस प्रकार से फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव होता है एडी और एएस के द्वारा, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के द्वारा. How economy will react if AD is greater than AS? Number one, aggregate demand is more than aggregate supply, and what will happen if aggregate demand is less than aggregate supply? Normally this 6 marks question come in the board exam. Topic is very interesting. So first of all, I have used here one word, equilibrium level. So what is the meaning of equilibrium level under this topic? Equilibrium level means, equilibrium level of income and employment means when there is a full employment level in the economy. When there is a full employment level, when an economy is able to achieve its equilibrium level, so normally it is assumed that all the factor of productions available in the economy got employment. इकोनॉमी के अंदर जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिल चुका है. दैट इज द मीनिंग ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. तो हाउ टू अचीव इट? विद द हेल्प ऑफ एडी एंड एएस अप्रोच. With AD and AS approach, it occurs when aggregate demand is equal to aggregate supply. जब aggregate demand और aggregate supply जिस point पर intersect करते हैं, the point where both aggregate demand and aggregate supply intersect to each other, that is known as full employment level or equilibrium level of income and employment. So in order to explain it, first you will give the definition of aggregate demand. The definition I already told you. What is the meaning of aggregate demand? The aggregate demand refers to the total expenditure occurred by the households and all other sectors in the economy during an accounting year. And what is aggregate supply? If I have not explained it earlier, let me explain the meaning of aggregate supply. Aggregate supply means the total amount of final goods and services. Total amount of final goods and services produced in an economy during an accounting year. किसी इकोनॉमी में जो टोटल फाइनल गुड्स एंड वैल्यू प्रोड्यूस हुई है किसी वर्ष में, that is known as aggregate supply. Krishna ma'am already taught you the chapter of national income. And in that chapter it was explained by Krishna ma'am that national income can be calculated with the help of number 1 output method, number 2 income method, number 3 expenditure method. So here if you see the total amount of final goods and services produced in economy during an accounting year, this is the definition of national income by output method. This is the definition of national income by output method. It means if we say aggregate supply is always equal to national income, it will not be wrong. Aggregate supply हमेशा national income के equal होती है as per output method of national income. तो we can say that AS is equal to C plus S. अब आप पूछोगे सर ये C plus S कहाँ से आ गया? It means my dear, when we say national income, so whatever national income earned during an accounting year, that income either it will be consumed या तो इसको consumed कर लिया जाएगा, or if it is not consumed entirely, so it will be saved. Saving. That's why I always say AS is equal to C plus S.
So here first of all you have to give definition of AD and AS. Then where income and employment level will be achieved, as I told, where AD and AS will intersect to each other. So it can be better understand with the help of following table and diagram. This is the table. First I am taking income. Why? In earlier tables also, in my previous video lectures, I took income with this figure only, 0, 20, 40, 60, 80, 100. Now I am taking consumption. At zero level of income also there will be some consumption. I told earlier, autonomous consumption. Here I am taking with a gap of 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Then my next column is investment. I told earlier also, here which investment we take? Autonomous investment. The autonomous investment is the investment which is done by the business, government sector. It is not profit motive. That's why we always take it constant, 10, 10, 10, 10, 10, 10. So here this is our first column. AD is equal to C plus I. Consumption plus investment, 20 plus 10, 30, 30 plus 10, 40, 40 plus 10, 50, 50 plus 10, 60 and so on. Now I need which column? AS, aggregate supply. Aggregate supply, as I told just now, C plus S, consumption plus saving. Consumption I have already with me. Now I need supply, S, saving. So this is S. If I deduct income minus consumption, Y minus C, so I will get which column? Saving column. So that is 0 minus 20, minus 20, 20 minus 30, minus 10, 40 minus 40, 0, 60 minus 50, 10, 80 minus 60, 20, 100 minus 70, 30. In this way we are getting saving column. Now I need AS, C plus S, consumption plus saving, 20 minus 20, 0, 30 minus 40, 30 minus 10, 20, 40 plus 0, 40, 50 minus 50 plus 10, 60, 60 plus 20, 80, 70 plus 30, 100. So if you see here this is the point where AD is equal to AS. AD is equal to AS. AD is also 60 and AS is equal to 60. So at this level we will be getting which level of income? Equilibrium level of income. Before this, if you see, here AD is greater than AS. अगर आप इससे पहले देखो तो एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, एग्रीगेट सप्लाई कम है, 30, 0, 40, 20, 50, 40. And if you see beyond this point, here aggregate demand is less and supply is more. AD is less and AS is more. AD is 70 but AS is 80. AD is 80 but AS is 100. So this is the equilibrium level where AD is equal to AS. Let us draw it on a diagram. On x-axis I am taking income and employment, and on y-axis I am taking aggregate demand and aggregate supply. This is AS curve which is starting from origin, aggregate supply, because it is our income, start from 0. And this is our AD which start from y-axis because of autonomous consumption at 0 level even. If you see, both are intersecting at point E, which is known as equilibrium level, जिसको हम क्या नाम देते हैं dear friends? Equilibrium level का नाम देते हैं. Before this, AD is greater than AS. This is this portion, and beyond this, AD is less than AS. So I think you understood how to achieve equilibrium level of income and employment with the AD and AS. Now, in my question, if you see, second question I asked, what will happen if AD is greater than AS? That is this position, AD is greater than AS. Aggregate demand ज़्यादा है, aggregate supply कम है. So I am explaining it now. See it carefully. When AD is greater than AS, it means people are spending more. अगर AD AS से ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है. एग्रीगेट डिमांड ज्यादा का मतलब लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं. इसका मतलब लोग स्पेंड ज्यादा कर रहे हैं, खर्चा ज्यादा कर रहे हैं. दैट इज डिमांड इज मोर, एग्रीगेट डिमांड इज मोर एंड एग्रीगेट सप्लाई इज लेस. डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है. तो
आप जरा अपनी कॉमन सेंस लगाइए, इफ एग्रीगेट डिमांड इज मोर, एग्रीगेट सप्लाई इज लेस, इट मीन्स to fulfill this aggregate demand, the producer has wonderful opportunity to produce more and more to cope up AD. अगर डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्रोड्यूसर के लिए बेहतरीन मौका है कि उनकी डिमांड को फुलफिल करने के लिए दे विल प्रोड्यूस मोर, वो ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, क्योंकि इकोनॉमी के अंदर डिमांड पहले ही ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो प्रोड्यूसर ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहेंगे नहीं चाहेंगे, तो उस प्रॉफिट ज्यादा प्रॉफिट को कमाने के लिए प्रोड्यूसर विल इंक्रीज द सप्लाई, दे विल इंक्रीज द प्रोडक्शन. तो व्हाट विल हैपन माय डियर, दे विल इंक्रीज in just a moment, they will increase aggregate supply, वो aggregate supply को increase करेंगे to meet aggregate demand, क्योंकि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, प्रोडक्शन कम है, अभी डिमांड ज्यादा है, तो प्रोड्यूसर के पास मौका है कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करे. When producer will produce more, it means what will happen, aggregate supply will increase, aggregate supply बढ़ जाएगी. Thus a level of income will achieve where both will intersect to each other. एग्रीगेट डिमांड ऑलरेडी ज्यादा है, सप्लाई पहले कम थी, अब प्रोड्यूसर ने सप्लाई बढ़ा दी, तो सप्लाई बढ़ाएगी तो एक लेवल आएगा जब इकोनॉमी अपने आप किसके लेवल में आ जाएगी, जब इकोनॉमी एडी और एएस के बराबर आ जाएगी, क्योंकि एडी पहले ही ज्यादा है, एएस को उन्होंने बढ़ाना शुरू कर दिया है. तो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट टॉपिक, व्हेन एडी इज ग्रेटर देन एएस. नाउ लेट अस कम टू द सेकंड, when AD is less than AS, means we are talking or we are in this situation कि हाँ डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो आपकी कॉमन सेंस क्या कहती है डियर, डिमांड कम है, इसका मतलब लोग खर्चा कम कर रहे हैं, लोग पैसा ज्यादा बचा रहे हैं, सप्लाई ऑलरेडी ज्यादा है. अगर सप्लाई ज्यादा है माय डियर, तो क्या प्रोड्यूसर के पास अनसोल्ड स्टॉक नहीं बच गया, प्रोड्यूसर के पास गुड्स ज्यादा बच गया होगा ना, क्योंकि डिमांड तो है ही नहीं, डिमांड कम है. So this is the second part. When AD is less than AS, it means people are spending less. लोग कम खर्चा कर रहे हैं, and producers have unsold stock in their hand. और producers के हाथ में माल बच गया जो बिका नहीं है. तो सर अब क्या होगा, प्रोड्यूसर विल स्टॉप फर्दर प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर ज्यादा प्रोडक्शन नहीं करेंगे, क्यों, पहले ही उनके पास अनसोल्ड स्टॉक है हाथ में, बिक नहीं रहा, क्योंकि डिमांड कम है, तो वो फर्दर प्रोडक्शन को क्या कर देंगे, कम कर देंगे. प्रोडक्शन अब बढ़ाएंगे नहीं, प्रोडक्शन को कम करेंगे. तो माय डियर, जब प्रोडक्शन कम होगा तो सप्लाई ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जब सप्लाई कम होनी शुरू होगी तो एक लेवल आएगा जो किसको मीट करेगा, एग्रीगेट डिमांड को मीट करेगा. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड, अभी जैसे मैंने आपको बताया सप्लाई ज्यादा है, स्टॉक कम है, प्रोड्यूसर के हाथ में स्टॉक पड़ा हुआ है, तो स्टॉक को क्लियर करने के लिए व्हाट प्रोड्यूसर विल डू, दे विल रिड्यूस द प्राइस, ऑटोमेटिकली मार्केट में प्राइस कम हो जाएगी. क्यों कम हो जाएगी, अंडरस्टूड हो गया, क्योंकि जब सप्लाई ज्यादा होती है तो प्राइस अपने आप डाउन आ जाती है, तो प्राइस जब डाउन आएंगी तो दूसरी तरफ डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, आई थिंक एग्रीगेट डिमांड विल स्टार्ट राइजिंग, एग्रीगेट डिमांड बढ़नी शुरू हो जाएगी. तो एक तरफ प्रोड्यूसर ने सप्लाई कम कर दी और दूसरी तरफ सप्लाई जो ऑलरेडी ज्यादा थी जिसकी वजह से प्राइस डाउन गई है, उस प्राइस की डाउन होने की वजह से डिमांड भी बढ़नी शुरू हो जाएगी. तो एक पॉइंट आएगा वेयर AD विल बी इक्वल टू AS. तो दिस वाज माय टॉपिक टुडे, एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट विद द हेल्प ऑफ AD एंड AS अप्रोच, एंड हाउ इकोनॉमी विल रिएक्ट व्हेन AD इज ग्रेटर देन AS. थैंक यू वेरी मच.